Well, yeah, I mean, it was quick because it's such an easy razor to shave with. I mean, one of the things is that it's very easy to just the way the handle is shaped, just the way the handle is being designed. It makes it so easy to shave. I think one of the beauties of the blade is that it just sort of adjusts to the contours of your face. It's easy, it just glides, glides on your cheek. It really gives you a comfortable, smooth shave, which I think is fantastic. I mean, just the technology that Gillette keeps innovating with, keeps coming up with, is absolutely phenomenal. Arbaz, how's your experience with the Gillette Mark III Turbo Pain? I mean, you were... my experience? Yeah? Fantastic. I think this is one of the newer razors which is, constantly innovating and bringing in new stuff. I think Gillette has done a fantastic razor. It gives a very smooth, clean, close shave. So the titanium-like finish, 3 blades right there, and advanced, quick as you guys noticed. So Kriti, yes. Closing words with this entire shaving, will you shave answer. Have you got your answer to your question? Well, I'm still asking the audience, I'm still asking the consumers that the opportunity can come to you anytime, it can knock at your door anytime. So, will you shave? And that's the question she's going to be asking Mumbai and, of course, in a lot of other cities. We're very glad to have you as part of the Gillette family. Thank you so much, guys, for being such wonderful ambassadors here. And, of course, with that, we ask you and all of Mumbai and the rest of the country the very, very important question, will you shave? Thank you so much. Can we have a huge round of applause for our icons on stage? We'll have a one-on-one media session. For those of you who've requested the one-on-one, may I please request you to assemble to my right, to your left of the stage here. Our PR team will help you Well, ये जिलेट का इवेंट है एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद जिलेट बहुत काफ़ी सालों से. मैंने कई इवेंट्स किए जिलेट के साथ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. वर्ल्ड क्लास ब्रांड है. इनकी शेविंग टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई एंड है. वेरी इनोवेटिव इन देयर पायनियर्स हैं अपने फील्ड के. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ एसोसिएट होना. इनकी टीम बड़ी अच्छी है. एंड आज का जो इवेंट था वो एक मैक 3 रेज़र जो टर्बो रेज़र है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उसके ऊपर है, जो एक बहुत शानदार रेज़र है. एंड वी आर हियर टू लॉन्च दैट. उसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो बहुत ही क्लोज और क्लीन शेप देता है. जो लोग शेव नहीं करते हैं तो उन्हें क्या मैसेज? वेल, जो लोग शेव नहीं करते हैं उनको मैं और जिलेट ये मैसेज देना चाहता हूँ कि शेव करना चाहिए आपको. शेव करने से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि आदमी फ्रेश लगता है, कॉन्फिडेंट लगता है, अच्छा लगता है. तो अगर ये सब अगर शेव होने से होता है तो आई थिंक पीपल शुड फील एनकरेज टू शेव. बाकी जिसको अपनी दाढ़ी रखनी है वो रखे, लेकिन जनरल ओपिनियन लोगों की ये है कि पीपल हु शेव आर प्रॉब्ली more confident and better received in society, as maybe that is what is the norm in terms of percentage. And people who, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं शेव नहीं करता तो मैं अपने आप को बड़ा थका हुआ महसूस करता हूँ, थोड़ा सा ऐसा लगता है बीमार हूँ. तो थोड़ा सा by even women have a better approach towards people who shave. तो generalize ये है, बाकी कोई चीज़ सही है गलत नहीं कह सकते. General opinion है कि people who shave are far more acceptable in that sense, more fresher, nicer looking that way. अगर शेव की बात की जाए तो आप हफ्ते में कितनी बार शेव करते हैं? मैं तो ऑलमोस्ट रोज़ शेव करता हूँ. मैं ऑलमोस्ट रोज़ शेव करता हूँ. जी. मैं डॉली की डोली अभी जो है वो मेरी अंडर प्रोडक्शन फिल्म है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है. उसके सिर्फ एक छोटा सा स्केड्यूल बाकी है जो हम नवंबर में करेंगे, जिसमें हम करीब 3 गाने शूट करने वाले हैं और कुछ थोड़ा सा 2 दिन का कुछ काम है, सीन्स वगैरह करें.
उसके बाद दिसंबर में हमारा सारा प्रमोशन का काम शुरू हो जाएगा, म्यूज़िक रिलीज़, ट्रेलर लॉन्च वगैरह. एंड वंस दैट हैपन्स देन वी आर लुकिंग फॉर अ अर्ली जैन रिलीज़ नेक्स्ट ईयर. अभी टेंटेटिव डेट 23 जैन है, लेकिन एक फॉर्मल अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों में आएगा जब मैं श्योर होऊंगा कि कौन सी डेट करना है. बट एज ऑफ नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ अर्ली ईयर रिलीज जैन 23. अभी तो शायद दबंग 3 में ही देखेंगे, वो जब भी हो. उसको अभी नहीं कह सकते कब होगा वो, बट इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर, लेकिन डोंट नो व्हेन. थैंक यू. लग जाएगा. Yeah. Well, it's my first event with Gillette. I think I'm very, very glad and proud to be associated with Gillette as a brand. It's a brand that's been there for so long. I think from the time I've been born, I've been seeing all the men in my family use Gillette. It's the world leader in terms of shaving technology and innovation. So it's really a great feeling to be associated with a brand that's been there for so long. Plus, when I met the team, I kind of really related with the values Gillette stands for. Because it doesn't tell you that you use Gillette and there are going to be 10 girls bouncing on you and you'll get an opportunity like this. But it just tells you to be prepared for any opportunity that comes your way. It just believes in a confident, hard-working man. And that's what I believe in. I believe in hard work, I believe in being prepared for anything. And I think not only on the special occasions like your interview or your wedding or something, you should shave every day, you should be prepared, look good, be confident every day, because you never know what might happen. And that's what Gillette tells me. One question more, the people who shave on a regular basis, what do you think specifically about the people who... I'll just say shave because I think जब आप shave करते हो, the moment you look at yourself, you just start feeling good about yourself, you feel more confident, and I think कभी भी हो सकता है कि आप बस स्टॉप पे खड़े हो या आप कहीं से गुजर रहे हो, आपको कोई मिल जाए या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जब आपको बाद में लगेगा कि यार आज मैंने शेव क्यों नहीं किया. So basically, I think you should shave every day, and that lazy stubble really doesn't give a good impression, be it on a girl or be it in your interview or be it anywhere, because it does make you feel a little laid back and not very ready and not very prepared. Confidence is the best thing that you can wear, so Gillette gives you that confidence, because when you shave, you really feel good about yourself. So will you shave? After yeah. She's like jumping on. I know. Upcoming projects. Well, I will be doing Singer's Bling with, and I'm also doing Farsi opposite Shahid Kapoor, and that's being directed by Raj. Both projects are going to start soon, and I'm really, really excited for both.